Welcome to our special election show, The Political Pradesh. And in the state of Uttar Pradesh, there's clearly a political quake because two cabinet ministers from the Bharatiya Janata Party government led by Yogi Adityanath quit in 24 hours, and one clearly appears is now joining the Samajwadi Party. So what exactly happened today in Uttar Pradesh in this flurry of resignations? Cabinet Minister Dara Singh Chauhan becomes the second state cabinet minister to quit the BJP. Moments after Dara Singh Chauhan's resignation, Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav tweets a photograph of him alongside Chauhan, but with the hashtag Mela Hobe. This as Prasad Maurya also took to social media site Twitter, asking Dara Singh Chauhan and even Swami Maurya earlier to reconsider the decisions. This comes a day, remember, after prominent OBC face and cabinet minister Swami Prasad Maurya quit BJP. But that was not all. Today, a Uttar Pradesh local court in Sultanpur issued an arrest warrant against Maurya over a 2014 case pertaining to alleged derogatory communal remarks on Hindu deities. दारा सिंह चौहान जी, आपने इस्तीफा दिया है, क्या वजह रही है? देखिए, मैं बार बार उसी सवाल को मैं दोहरा रहा हूं। जिस सरकार को बनाने के लिए इस प्रदेश के पिछड़े, दलित, वंचित समाज के लोगों, इस प्रदेश के नौजवानों ने एक तरफा निर्णय लिया था भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए कि शायद आने वाले दिन में हमें न्याय और सम्मान मिलेगा, लेकिन 5 साल तक अपने सम्मान, पहचान और न्याय के लिए तड़पते रहे, उधर ध्यान नहीं दिया गया। और मैं बार बार इस बात को लेकर अपने प्रदेश से लेकर देश के सभी नेताओं से अपनी गुहार लगाता रहा कि शायद उनको न्याय मिलना चाहिए। इस तरह की स्थिति है। जब उस सारी बात को अनसुनी कर देने के बाद मैंने आहत होकर के नैतिक रूप से मैंने कहा मुझे सरकार में बने रहने का कोई हक अधिकार नहीं है, इसलिए मैंने आज राज्यपाल को अपना त्यागपत्र दे दिया। And listen in now to what Swami Prasad Maurya said to India Today's news director Rahul Kanwal about the FIR against him, a possible arrest warrant. All of this hours after he quits the BJP in Uttar Pradesh. Listen in. आपके खिलाफ एक अरेस्ट वारंट जारी हो चुका है। 7 साल पुराना केस है। आपने अभी बीजेपी छोड़ी है, सपा ज्वाइन करने की आप बात कर रहे हैं। ऐसे में 2014 में एक केस था जिसमें आपने कुछ देवी देवताओं के खिलाफ बयान दिए, वो बयान गलत पाए गए या गलत माने गए, इस पे आपके खिलाफ अरेस्ट वारंट है और आपको 24 जनवरी को सुल्तानपुर की कोर्ट में पेश होना है। आपके खिलाफ तो मौर्य साहब अरेस्ट वारंट आ गया, आपने यहाँ टीम छोड़ी और पुलिस आपके पीछे। वो आने दीजिए, कोर्ट कचहरी भी है, हर चीज का मैं मुकाबला करूंगा। मैं भी हाई कोर्ट का एडवोकेट था, मैं हमेशा न्याय में विश्वास करता हूं, न्यायपालिका में विश्वास करता हूं। न्यायपालिका में मैं कभी वकालत भी करता था, इसलिए जो न्यायिक प्रक्रिया है मैं उस रास्ते से गुजरूंगा, उसका मैं सम्मान करता हूं। योगी आदित्यनाथ जी के काम करने के तरीके में या उत्तर प्रदेश की बीजेपी की सरकार में आपने क्या कमी पाई? जो आप देख रहे थे, आप मंत्रिमंडल में थे, कैबिनेट की मीटिंग अटेंड करते थे, बीजेपी की प्रायोरिटीज में आपने क्या कमी पाई कि आपको लगा कि यह फैसला लेने की जरूरत है? देखिए, बीजेपी की प्रायोरिटी उत्तर प्रदेश और देश की जनता नहीं, आरएसएस का एजेंडा रहता है। और जब आरएसएस का एजेंडा चलता है तो बड़े बड़े नेताओं की बोलती बंद हो जाती है, एक दूसरे पर टालते हैं, एक दूसरे को देखते हैं और आरएसएस का एजेंडा सब पर भारी हो जाता है। और यही कारण है कि कभी कभी ये नेता अपने आप में असहाय साबित हो जाते हैं। As Yogi Adityanath touched down in Delhi on Tuesday to chalk out the blueprint for party strategy for upcoming assembly polls, his party suffered a bolt from the blue in Lucknow. One minister and 4 ruling MLAs have jumped the ship ahead of the state elections. Swami Prasad Maurya, an influential backward class leader, has resigned as Uttar Pradesh Labour Minister and quit the party.
Maurya's resignation letter said he was unhappy with BJP's negligence towards dalits, farmers, small and medium-scale businesses and unemployed youth in the state. Soon a picture of former minister with Akhilesh Yadav made the rounds, delivering a jolt to the BJP. Maurya had dumped the party to join hands with Samajwadi Party. When asked if he left the party because his family members were not getting a ticket, he rejected the charges. अरे बेटे या बेटी को टिकट मिले ना मिले इससे कोई मतलब नहीं भाई। हमारे सामने पूरा प्रदेश है, दलित है, पिछड़ा है, किसान है, बेरोजगार नौजवान है, छोटे लघु मध्यम व्यापारी हैं। इसलिए उनके हितों की मुझे चिंता है। एक बेटा नहीं, 1000 बेटे हमारे उत्तर प्रदेश में हैं। इसलिए हम उन सब की लड़ाई लड़ते हैं। हम केवल एक बेटी और बेटे के चक्कर में राजनीति नहीं करते। The BJP ironically extended an olive branch through Twitter, with Deputy CM Keshav Prasad Maurya inviting Swami Prasad Maurya to sit down and talk. After Maurya's exit, a string of resignations followed. MLAs Roshan Lal Verma, Bhagwati Singh Sagar, Brajesh Prajapati and Vinay Shakya quit the BJP. All four are likely to join SP. बीजेपी छोड़ दी आपने? छोड़ नहीं रहे, छोड़ दी है स्वामी प्रसाद जी के साथ। सपा में जा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। In a dramatic twist, MLA Vinay Shakya's daughter Riya has come out to claim the leaders are being forced to join Samajwadi Party. हमारे चाचा श्री देवेश शाक्य व हमारी दादी मेरे पिताजी को लखनऊ लेकर चले गए हैं। इस समय मेरे पिताजी की स्थिति ठीक नहीं है। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का कि उन्होंने उच्च स्तर पे डॉक्टर पैनल टीम बनाकर मेरे पिताजी का इलाज करवाया। The resignation of Maurya and other MLAs are a big blow to the BJP. The party is heavily banking on popularity of Narendra Modi and Yogi Adityanath to beat back the big caste alliance being built by Akhilesh Yadav in Uttar Pradesh. Bureau Report, India Today. And of course, flurry of meetings and activities in Uttar Pradesh, which is an election-bound state. It is Shiv Sena leader Sanjay Raut, who's all set to possibly meeting the Kisan Union leader Rakesh Tikait, remember, who was spearheading the farmer agitation for the last 1 year. And this meeting is likely to soon take place in Muzaffarnagar tomorrow at about 12 p.m. This Raut Tikait meeting is of course ahead of elections, and in just about few hours from now, 12 p.m. tomorrow in Muzaffarnagar, what sources are telling us, this meeting will take place. Shiv Sena will be contesting about 50 to 100 seats in the UP Assembly elections. So apart from Uttar Pradesh, what's happening now in election-bound Punjab? Navjot Singh Sidhu has finally spoken up, and his first interview to India Today, speaking on all possible questions, whether it is on Kejriwal, on Channi and inner turmoil at all within the Congress or not. Navjot Singh Sidhu, the best excerpts here on Political Pradesh. Listen in. केजरीवाल कहते हैं कि मुझे सहानुभूति है सिद्धू साहब से। सिद्धू साहब बन नहीं पाए मुख्यमंत्री, उनको उनकी पार्टी उनको नहीं तवज्जो दे रही है, तो मुझे सहानुभूति है, सिंपैथी आपको जता रहे हैं। केजरीवाल साहब को कहो, लूर लूर करते फिरते थे वो कि सिद्धू हमारी तरफ आ जाए। सिद्धू क्यों जाएगा ऐसे दोगले लोगों की तरफ? मतलब आपको बुलाने की कोशिश की? मतलब हर जगह पिछली बार डिप्टी सीएम बन जाओ। आज भी आप देखें कांग्रेस के ही लोग हैं जो ये उठाए घूम रहे हैं। मुझे ये बात बताइए, मैं केजरीवाल से ये पूछना चाहता हूं जी कि आपकी किस चीज पे पंजाब विश्वास करे? आपके मॉडल में ऐसा क्या है? क्या नौकरियां आपने दिल्ली में दी? आपने यहां आके कहा कि महिलाएं अगर 18 साल के ऊपर हो जाएंगी, इसका मतलब 4.25 साल आपको पंजाब की याद नहीं आई, आप कभी यहां नहीं आए, आप ऐसे टपके जैसे आम टपकता है ठाएं करके, और फिर आपने आके यहां कहा कि जी महिलाओं को हम 1000 रुपए देंगे। तो इनसे पूछिए, अगर एक महिला को भी इन्होंने
दिल्ली में 1000 रुपए दिए हों, मैं टांगों के नीचे से निकल जाऊंगा। नंबर 1। नंबर 2, कोई एक भी महिला इनकी कैबिनेट में है। नंबर 2। नंबर 3, कोई एक भी पंजाबी इनकी कैबिनेट में है। नंबर 4, इनका SYL के ऊपर क्या स्टैंड है। तो आप दिल्ली मॉडल को एक्सपोज कर रहे हैं लगातार। सिंपल, कोई मॉडल ही, मतलब एक बात समझिए, ये दिल्ली मॉडल लेके आए थे और झोले में से दिल्ली मॉडल जो है फट के झोला वो नीचे गिर गया, फिर पंजाब मॉडल लाना पड़ा। वो भी अगर नकल करनी है तो अकल चाहिए। You must watch this complete interview at about 7 p.m. and it is unmissable agenda setting. This is Navjot Singh Sidhu clearly speaking on all issues, and of course they're attacking the Delhi model at par, saying not at all with Punjab. So while Navjot Singh Sidhu is busy attacking Arvind Kejriwal and that he's come from Delhi, it's a failed Delhi model that he's presenting, Arvind Kejriwal has landed up in Chandigarh. He's all there campaigning, trying to meet people and of course spread the message of the Aam Aadmi Party. At this point, with Arvind Kejriwal there in Punjab, he's proclaiming that Kejriwal has said Congress and Shiromani Akali Dal are working on a partnership. That is why they will not go after each other. But he's also claiming that people do want Aam Aadmi Party government as a change in Punjab and has listed out a 10-point model for the election-bound state. He then took on the Charanjit Singh Channi government and said, if elected to power, Aam Aadmi Party government will ensure law and order will improve in the state and has vowed that justice will be brought. The previous incidents of the Beadbi, which are the sacrilege cases, remember, which even 2 lynchings had taken place. कांग्रेस सरकार के दौरान लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति, बेअदबी के कांड हो रहे हैं, बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं, प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी का ब्रीच हो रहा है, तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति काफ़ी ख़राब होती जा रही है। चन्नी सरकार उसको हैंडल नहीं कर पा रही है। आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी, हम जनता को विश्वास दिलाते हैं कि कानून व्यवस्था को अच्छा करेंगे, शांति होगी चारों तरफ, दोषियों को सख्त से सख्त सज़ा दी जाएगी कि दोबारा कोई इस तरह से ना कर सके, और किसी भी सुरक्षा हो, चाहे प्रधानमंत्री की सुरक्षा हो, चाहे आम आदमी की सुरक्षा हो, सबको सुरक्षा सही देने की जिम्मेदारी पंजाब सरकार, आने वाली पंजाब सरकार। And staying with Punjab, remember, it is India Today's special investigation operation breach that the whole country is talking about, where we managed to get out of some of the top cops and also there the security apparatus in Punjab, that there was a minute-to-minute detail available with the police personnel in Punjab ahead of Prime Minister's visit, that there could possibly be farmers' trouble. Top ministers of the Modi government now have cornered the Congress-led Punjab government and are demanding answers. Union Minister Smriti Irani not only appreciated special investigation by India Today but said that the Congress deliberately, according to her, kept Prime Minister Modi in a vulnerable position and slamming Punjab government for Modi's security breach. Union Minister Hardeep Singh Puri also spoke to India Today and said that there was a deliberate attempt, it appeared, to sabotage PM Modi's life. Union Minister Prasad Joshi even took to social media site saying that there is a nefarious plot to sabotage the Prime Minister's life and that is now exposed. But Punjab Minister Rajkumar Verka, speaking on the sting operation, said the entire incident is being inflated to hide the fact that it was Prime Minister's rally that was basically a flop. So across the political spectrum, this investigation is being talked about. मैं आज तक को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने सत्य को उद्घाटित किया है और देश के सामने एक सच को लाने का साहस दिखाया है। अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए, अपनी विफलताओं का पर्दा डालने के लिए ऐसा धृष्टतापूर्ण बयान देना, मुझे लगता है कि अब पंजाब की जनता के सामने सब कुछ स्पष्ट हो गया है और इसके लिए मैं इंडिया टुडे और आज तक ग्रुप दोनों को इसके लिए बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ। बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है, सच तो ये है, वो स्वीकार करना चाहिए बीजेपी वालों को कि पंजाब में उनकी रैली फेल हुई है। 70,000 आपने कुर्सियां लगाई, 700 बंदा वहां पहुंचा नहीं, तो प्रधानमंत्री ने एड्रेस कहां करने जाना था? आपकी राह क्या कर रही थी? आपकी इंटेलिजेंस क्या कर रही थी?
आपकी आईबी क्या कर रही थी कि ये सियासी नाटकबाजी है, आपको कोई खतरा नहीं था, आपकी रैली फेल हुई, पंजाब के ऊपर ठीकरा फोड़ना बंद करो। टेस्टिंग ऑपरेशन इस बात को बताता है कि यह एक शरारतपूर्ण साजिश शरारतन आयोजित की गई साजिश पूर्व प्रायोजित साजिश का हिस्सा है। यह एक सुरक्षा के साथ की गई कॉन्स्पिरेसी है और स्पॉन्सर्ड है। अब यह स्पष्ट हो गया है। Welcome back. Now there's some big news coming in of how the British Prime Minister Boris Johnson has sent out an apology for attending a garden party in 2020 with his staff members while there was a coronavirus lockdown across the country. Remember, Boris Johnson had been facing a lot of anger from public for attending and organizing, even if it was a small party, nevertheless, while there were restrictions around the country. Listen in now to what Boris Johnson has said. UK Prime Minister Boris Johnson is under fire after it emerged his private secretary invited over 100 people to a bring-your-own-booze party in the garden of Downing Street during the first coronavirus lockdown. The revelations came in a leaked email seen by British broadcaster ITV. At the time, these were the rules in Britain, as explained by the PM himself just 10 days before the alleged gathering. You can sit in the sun in your local park, you can drive to other destinations, you can even play sports, only with members of your own household. You must obey the rules on social distancing, and to enforce those rules, we will increase the fines for the small minority who break them. Police prosecuted people for having parties, erected random checkpoints in some areas in Derbyshire, central England, and used drones to monitor beauty spots. ITV reported that around 40 members of staff attended the event on May the 20th, 2020, including the Prime Minister and his partner Carrie. This is the latest of at least 5 allegations that government departments broke lockdown restrictions and are now under investigation by senior government official Sue Gray. Asked about the claims of parties at Number 10, Johnson told Parliament last month that all COVID guidance had been followed, no rules had been broken, and that there had been no party in Downing Street. British Minister Michael Ellis answered an urgent question to the Prime Minister in Parliament about the party on Tuesday. I apologise again, unreservedly, for the upset that these allegations have caused. The Prime Minister has asked for an investigation to take place, and the terms of reference for the investigations that are underway have already been published. In response to a question asking whether Johnson would resign if he's found to have broken the law, he added, "The Prime Minister is going nowhere. The Prime Minister retains the confidence of the people of this country." Is going nowhere. That is all from me for today. Thank you so much for watching 6 p.m. Prime. But stay tuned, because coming up at 7, that full interview of PCC Chief from Punjab, Navjot Sidhu Punjab gets you that big and exclusive interview. Thank you for watching. Stay tuned.